क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपके हसनैन? कोशिश करता हूँ, आई प्रेफर कि मैं अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान दूँ। क्या जज्बा था? हाउ डिड यू गो अहेड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और इतना कुछ कैसे कर लिया? इतना सब कुछ होने के पीछे एक छोटी सी चीज़ थी। एक प्रोड्यूसर को मेरे अंदर वो चीज़ देखना दैट आई हैव द पावर टू डू इट। ठीक, और फिर क्या हुआ उस शो के बाद? उस शो के बाद दैट वेंट वेरी गुड, पीपल वर शेयरिंग एंड देयर वाज अ प्रोड्यूसर एट दैट टाइम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दिस इज़ मी हम्माद साफ़ी। आज हमारे साथ एक बहुत यूनिक गेस्ट मौजूद है हमारे साथ। ही इज़ करंटली 9 years old and is an RJ, he is a teacher as well, he is a motivational speaker as well, he is a good writer as well, and इस एज में, इस कम एज में वो बहुत कुछ कर लेता है, बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग कर लेता है। He is a very huge inspiration for the kids all around Pakistan and all around the globe. Today we have Muhammad Hasnain with us. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hasnain, how are you doing? I'm fine. How's life? Life is going good. Going good. क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपके हसनैन आजकल? मेरी एक्टिविटीज़ आजकल, मैं कोशिश करता हूँ, आई प्रेफर कि मैं अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान दूँ जी, क्योंकि फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम जब से मैं अपने स्कूल के अंदर हूँ, सो तब से मैं सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था जी, बिकॉज ऑफ माई अदर वर्क। सो आजकल मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि अपने स्कूल को ज़्यादा ध्यान दूँ। ये सॉरी डायरेक्ट मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्वेश्चंस की तरफ आ गया हूँ, बट इट इज़ स्टिल अ वेरी ह्यूज मिस्ट्री। एट द एज ऑफ 9 माशाल्लाह आप एक आरजे भी बने हैं, आप एक एंकर पर्सन भी बने, आपने बहुत कुछ कर लिया अभी से इस उम्र में। सो हाउ डज़ इट फील टू बी दिस इंस्पिरेशन और सच अ यूनिक पर्सन, और इतनी एज में इतना सब कुछ कर लिया? हाउ डज़ इट फील? For me, I feel if I'm a normal person, but औरों का मेरे लिए feeling that is extra exaggerated level of feeling. अच्छा, But मैं अपने के लिए मुझे ये कुछ ख़ास नहीं फील होता क्योंकि this isn't some kind of wizardry या ये कोई mystery नहीं है। ये दिल की ख्वाहिश होती है, if you have the will if you have the will. and if you want it, so you can do it. Sure, definitely. If you want it, you can do it. So, how has been this journey? How did you started it? कैसे शुरू किया? क्या मोटिवेशन थी? क्या इंस्पिरेशन थी? क्या स्पार्क था? क्या जज्बा था? How did you go ahead with all of these things, और इतना कुछ कैसे कर लिया? इतना सब कुछ होने के पीछे एक छोटी सी चीज़ थी। वो था एक प्रोड्यूसर को मेरे अंदर वो चीज़ देखना दैट आई हैव द पावर टू डू इट। ठीक, in 2018 जी, so at that time I had a show. ठीक, it was a Ramzan, it was a transmission of 2 hours जिसके अंदर they needed a kid. ठीक, And on that time my mother was working there, so वो लोग मुझे पहचानते भी थे and they knew that I can due to do your it. social activities. Yes, due to social activities, they knew that I can do it. So they called us just for experimental purposes. And that was very good, and people were calling and cheering for me, and people were loving the way I spoke because I was speaking without any hurdle. And as a kid, your point of views aren't that much like people don't listen to them. Exactly. वो आपके point of views को कोई ख़ास वो importance नहीं देते, prefer नहीं करते क्योंकि आप बच्चे हैं। और इसी तरह बच्चे के दिल के अंदर बहुत सारी बातें होती है जो वो शेयर करना चाहता है क्योंकि ऑन दैट टाइम आई वाज इन सच अ स्कूल के उसके अंदर बच्चे ऐसे थे दैट दे वांट माय फ्रेंड्स, और मैं उस वक्त में स्टिल मैं जो है आई एम काइंड ऑफ नॉट इनटू कीपिंग मोर फ्रेंड्स। मेरे सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स हैं और काम के फ्रेंड्स हैं। इतना स्मॉल सर्कल क्यों? मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सर्कल से फजूल लोगों को और उन जैसे लोगों को हटाऊँ क्योंकि ये अच्छे तो होते हैं, आपके लिए मदद करते हैं, फेस टू फेस मैं उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ, पर ओवरऑल वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है आपके लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम होता है। वो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं, वो आपके टाइम को वेस्ट करने के अंदर एक बहुत बड़ा पर्पस होते हैं। एक तरफ आपके अपने दिल के अंदर वो विल नहीं है कि आप कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके दोस्त की डिस्करेजमेंट कि वो आपको डिस्करेज करें। सो आई थिंक बेटर देन दैट इज़ कि अपने साथ भी उसी तरह के दोस्तों को रखो जिनके आपकी तरह एम्बिशंस बढ़े। ठीक, और फिर क्या हुआ उस शो के बाद?
उस शो के बाद that went very good, people were cheering, and there was a producer at that time. अच्छा. He told my mother that create a page and other things, YouTube channel वगैरह. उस टाइम पर ये सब कुछ इतना टॉप पे नहीं था. अच्छा. ये सब कुछ लाइक गवर्नमेंट लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते थे. या पीपल वर यूजिंग इट बट पीपल डिडंट न्यू हाउ टू क्रिएट पेजेस एंड फेसबुक. अवेयरनेस नहीं थी. यस, अवेयरनेस नहीं थी इतनी ज़्यादा. सो माय मदर डिडंट न्यू व्हाट वाज दैट, एंड आफ्टर दैट आई केम इनटू दिस यूनिवर्सिटी. एंड इस यूनिवर्सिटी के आने के बाद एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड. It felt, it still feels like if there was some kind of wizardry behind me happening. पता नहीं किसी तरह पर इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि मैं समझ नहीं पाया कि किस तरह इतने साल गुजर गए और किस तरह मैं इस मुकाम तक पहुंचा. Exactly. मैं तो अपनी छोटी छोटी कोशिशें करता था, वो अपनी लगभग जितना मैं कर सकता था मैं उतना करता था. और मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा स्किल्स के अंदर मास्टर लेवल तक जाऊंगा, इतने ज़्यादा स्किल्स को अपना इन्हांस कर पाऊंगा या उन्हें सीख पाऊंगा. तो वो क्या मोटिवेशन थी जिसने आपको मतलब ये फोर्स किया कि आप करो ये चीज़ें, सीखो? Even my mother, like sometimes I still remember once there was a very rainy day and at that time I was taking my Chinese classes. Achha. And on that day I still remember my mother used to always get discouraged because we weren't getting anything from it. ठीक. क्योंकि like हमारे एक तरह से जहाँ पर भी हम जाते हमारे लिए शर फसाद और इस तरह कैरेक्टर्स होते, पर मैं कोशिश करता कि मैं उनकी जगह उनसे कुछ सीखता. ठीक. क्योंकि आपके दुश्मन ही वही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर रिसर्च करते हैं आपकी खामियां ढूंढने के लिए. और मैं लगातार कोशिश करता कि मैं अपनी उन खामियों को देखूं और उन्हें ठीक करूं, ताकि उनके लिए कोई खामी हो ही ना कि वो मेरे अंदर पॉइंट करें. बिल्कुल ठीक. मुझे स्टिल याद है कि मेरी मदर ने कहा छोड़ो नहीं जाते, बट आई सेड नो वी शुड गो. क्या बात हुई, अगर बारिश है क्या हुआ, फिर भी हमारे पास पाँव तो हैं, हमारे पास अपने लिए दिमाग तो है कि हम लोग कंट्रोल कर सके इसको. वी कैन वॉक एंड वी कैन गो. हम लोग साइड को जाएंगे, साइड वे से जाएंगे, हम लोग गाड़ी से चले जाएंगे, बट वी शुड गो. ठीक. There is no need to get discouraged. और इसी तरह लाइफ के बहुत से पार्ट के अंदर इस तरह रेनी आपके बीच में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपके बीच में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आपको डिस्करेज करती हैं. आपके डिवोशन टू योर लव एंड योर एवरीथिंग टूवर्ड्स योर विल और टूवर्ड्स योर गोल, उसे वो कम करती हैं. बट अगर आप उसे छोड़ेंगे वो खुद उसे ख़त्म कर देंगे. और अगर देखा जाए हम सब के अंदर एक कैरेक्टर होता है. हम सब के अंदर एक किस्म का, हम उसे छोटा इंसान भी कह सकते हैं, वो होता है. वो इंसान हमारी विल को जो है ऊपर करता है और हमें ख्वाहिशों को ऊपर करता है. वो नफ्सी वाली ख्वाहिश नहीं, दिली ख्वाहिश जो हम कहते हैं कि यार मुझे ये करना है. पर दूसरी तरफ जो नफ्स है और जो डिस्करेजमेंट और जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनकी वजह से हम लोग इतना भूल जाते हैं कि हमारे साथ एक अंदर का इंसान भी था कि वो एक दिन हम उसे कुचल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोगों ने उसे कब कुचला. और जब हम कुचल लेते हैं हमारे अंदर वो ताकत नहीं रहती कि हम लोग फिर से काम करें. वो हमें लगातार चेयर करता है दैट यू कैन डू इट. पर जब बहुत लेट हो जाता है हमें याद आता है कि लाइफ इज़ नॉट अ रेस. लाइफ इज़ समहाउ अ रेस जिसके अंदर यू हैव कंपेटिटर्स, बट अदर देन दैट लाइफ इज़न्ट रेस, लाइफ इज़ फन. एंजॉय द प्रोसेस. रेस का प्रोसेस ही एंजॉयबल होता है. रेस के अंदर पहुंचने या स्टार्ट एंजॉयबल नहीं होता. ठीक. अगर एक टेस्ट, नाउअडेज इट्स माय टेस्ट्स, तो अगर एक टेस्ट है उसका स्टार्ट एंजॉयबल नहीं होता, एंड एंजॉयबल नहीं होता. ये बीच में से सोच कर अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर आप बेट लगा के इस चीज़ को लगाते हो दैट दिस इज़ द आंसर. एग्जैक्टली. और आप अपने ब्रेन के किसी ना किसी कोने से समहाउ वो आंसर निकालने की कोशिश करते हो. That is the fun part, where you know that what are your boundaries. और somehow ऐसे 3 ही पार्ट्स होते हैं लाइफ के कि जिसके अंदर इंसान अपनी बाउंड्रीज को पुश करता है and he unlocks a new boundary. Or I can say extend it, or I can say he finishes the boundaries and get unbounded to any kind of boundaries. Exactly. So how does one cope up with this problem? जो
उस inner voice को कुचल लेते हैं, right? And they get distracted, demotivated or discouragement, right? So discouraged हो जाते हैं, तो how does one face that problem then? कैसे करें? इसके करने का आजकल ना साइंस ने आंसर ढूंढा ना किसी और ने आंसर ढूंढा. इसका सिर्फ एक ही आंसर है. अच्छा. That is self love, unity with yourself. ठीक. And एक ऐसी जर्नी पे जाएं जिसके अंदर आप अपने सेल्फ को ढूंढें. ये मेरा मतलब नहीं कि आप एक खाली बस में जाएं. Self realization. Self realization, realize who you are and what you wanna be. Exactly. Know yourself. कभी कभी लाइक अक्सर मेरे पेरेंट्स जो है आउट होते हैं फॉर समथिंग एंड व्हेन द लाइट्स गो ऑफ एंड द इलेक्ट्रिसिटी फिनिशेस सो आई गेट लोनली एंड यूजुअली आई डोंट यूज फोन एंड होम सो कुछ रास्ता नहीं होता. आई जस्ट थिंक. जब मैं थिंक करता हूँ मेरे जहन में वो मेरी ज़िंदगी के पार्ट्स आते हैं, वो मेरी ज़िंदगी के वो चीज़ें आती हैं जो मुझे पता नहीं थी. मैं अपने आप को ढूंढना, अपने आप के अंदर वो चीज़ें निकालना शुरू कर देता हूँ. और ये अपना आप नहीं होता, ये वो इनर वॉइस होती है जिसकी पर्सनालिटी को आप ढूंढते हैं. So do you think by now you have realized yourself or not? There is no realization. Then? There is learning. Learning. I don't call losers. I call them learners. Who upgrade themselves Exactly. and they become better. Exactly. And winners are also learners, but they are better. They are better at learning. And losers who are also learners, they can also enhance their skills. And if they enhance their skills, so they can go ahead and they can have a better point of view. So, ये like if realization was there and you could do it, अगर देखा जाए only a student isn't a learner. जी. Everyone in life is a learner. Exactly. When you fall in your life, when you rise from your ashes, that is all learning. Exactly. You learn from your mistakes. There is no such human who haven't learned anything from his mistakes. That's ultimate reality. Even Prophet Muhammad, peace be upon him, says that learn from cradle to grave. So Yes. it is a problem. It is a process that starts while you are a kid and finishes and goes all the way up to your Yes. death, right? It's good Entire life will go to like that. have mistakes. Exactly. It's good to make mistakes because mistakes are meant to be learned. Exactly. And you have to learn from it. So, And if you don't learn it, then those mistakes are of no so use. have you had any sort of mistakes that you had a huge lesson from? Yes, I suffered a lot because of my procrastination. Okay. Why? I was a procrastinate in the start. I didn't have the will. Like there comes a time when you cannot do it. And I still remember when my mother used to tell me that you're the one whenever I get discouraged, you cheer me up. But why are you discouraged today? There is like a time when you get discouraged and you cannot do it yourself even if you're the most powerful man. Even if we watch to anyone. If that's Elon Musk, if that's me, if that's you, or if that's any other person other than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, everybody gets discouraged and demotivated and he leaves his path. And that was when I got a refreshment. I skipped my like that was my vacations of school. I was continuously busy in my work and I used to have so much bundles of work. MashaAllah. And I used to do it and then I skipped it. I said no, give time to yourself. And that's when I realized that wasn't actually the work that made me such kind of person. That was the procrastination that made me such kind of person. And now you have solved that problem for you. Yes. Good. Hasnain, this level of maturity at such an age, kaise? It's not the Experiences, books, teachers, what? What do you say? I think that it's the wounds. It's not the age actually. It's the wounds, the experiences. The more you fell, the more you rise. If as we divide, we fall. Exactly. As we unite, we rise. Exactly. And we are always in chaos with our own selves. One part of us is totally on the wrong path, and one part of us is making us more devoted towards our goal. Exactly. And we are always, both of us are always in chaos with each other. And in between this,
we are the ones who suffer. Because we cannot choose that which path is correct. Exactly. On one hand, the inner self wants peace, the inner self wants to get what it wants and to achieve your goals. He wants satisfaction. Exactly. Satisfaction is through happiness, and there is no bigger satisfaction than happiness, than achieving something you love. And the other part wants fun, enjoyment, and relaxation and laziness. So it's very hard. And it's not about the things that you do. It's the wounds, it's the experience, it's the time you pass. And the much more you research, the much more you'll understand. Exactly. Hasnain, you have a very huge and bright future ahead. And I wish you a very, very best of luck for that. Inshallah, you'll definitely be successful. Thank you so much. Jazbe ke saath, you're going ahead, that is truly amazing. And that is exceptional. बहुत rare होता है ऐसा हमारी society में actually. बहुत कम ऐसा होता है. And you are a very huge inspiration for the children as well. आपके age के बच्चे, they look up to you. And as you said that you want to do something for the youth, definitely youth looks up to you. Children of your age and under your age and even above your age, adult even look up to you, right? And they see you as a hope, they see you as a very huge personality in future, and I believe in you. Definitely you'll be able to achieve that. It was really nice to talk to you, buddy. Really enjoyed it a lot. Thank you so much for joining me. So ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉक शो कह लें इसे आप. बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई मेरी हसनैन से, एंड इट वाज रियली नाइस टू टॉक टू हिम बिकॉज जो लेवल इसने अचीव किया इन सच एन एज बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं. एंड डेफिनेटली इसके एक बहुत पीछे इसका एक सबसे बड़ा राज मैं ये कहूँगा वो ये है दैट ही गॉट एन एनवायरनमेंट बाय हिज पेरेंट्स की तरफ से एनवायरनमेंट मिला, सपोर्ट मिली, मेंटर्स मिले, टीचर्स मिले, और ऐसा एक एनवायरनमेंट मिला इसके इर्द गिर्द लोगों की तरफ से और जिसने इसको बिल्ड किया, जिसने इसको बनाया. एंड ही हैड अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट लाइक एवरीबॉडी डज इन देयर लाइफ. सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एंड ही वॉज वन ऑफ देम. ही डिड गेट द अपॉर्चुनिटीज़ बट उसने ज़ाया होने नहीं दिया अपॉर्चुनिटीज़ को. ही ग्रैब्ड दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड ही यूटिलाइज्ड देम, राइट, एंड मेड हिज सेल्फ बेटर. सो आई प्रेफर कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस बच्चे को देखें और अपने बच्चों को जो है इंट्रोड्यूस कराए हसनैन से, समझाए दैट लुक अप टू हिम, राइट, लुक एट हसनैन, ये किस तरीके से इन सच एन एज इतना कुछ अचीव कर रहा है, इतनी बड़ी एम्बिशंस रखता है इन सच एन एज. सो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. इन सब के लिए मैं भी दुआ करता हूँ, आप सब भी दुआ कीजिएगा, हम दोनों के लिए कीजिएगा, हम सब के लिए कीजिएगा. इंशाल्लाह देयर इज़ अ लॉट टू डू मोर. सो इन फ्यूचर कभी अगर मुलाकात हुई सो वील गो अहेड एंड वील ट्राई टू कंटिन्यू दिस discussion inshallah. Thank you so much Hasnain for joining. Thank you all for listening to me. It was really nice to have you Hasnain. Thank you.